नास्यस्तु नसो मे प्राणोऽस्तु अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु बाहोर्मे बलमस्तु ऊर्वो मे ओजोऽस्तु वरिष्ठानि मे अङ्गानि तनुस्तनवा मे सहा सन्तु। चन्दनं चतुभ्यं नमः। हरिः ओम्। शुभं भवतु कल्याणं शुभं भवतु कल्याणम् आयुरारोग्यधनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनं दीपो मे हरतो पापो प्रत्यक्षदीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं भवतु कल्याण भवतु मङ्गलं भवतु। दीपस्वरूपिणे नमः। हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्यजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः महालक्ष्म्ये नमः। ध्यायामि नमः गुम् आवाहयामि नमः गुम्। शुभं भवतु। अतः संकल्पम्। हरिः ओम्। तत्सतों तत्सतों विष्णुः 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 नमः परमात्मने। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय श्रीपरमेश्वरज्ञाय अद्य ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथं चरणे जाम्बुद्वीपे नौठमर्काखण्डे कनदादेशे भवानी शङ्करमन्दिरे आर्याव्रतान्तर्गता ब्रह्माव्रतेकदेशे विक्रमशके बौधावतारे वर्तमाने यथानां संवत्सरे श्रीशुभसंवत 2079 श्रीरक्षसनामाब्दः संवत्सरे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे मंगलवासरे अष्टमी तथौयां पूर्वफागुनी नक्षत्रः वज्रयोगाविष्टीकरन् रवि उत्तरायणे एवं गुणाविशेषणा विशिष्टायां शुभपुण्यादिने सकलश्रुति स्मृति पौराणोक्तः फलप्राप्तिकामम् आमुखनाम यजमानस्य कमलनामधेयस्य सपरिवारनामधेयस्य भवानी शंकरमन्दिरे मंगलवार पूजनम हनुमान जी अस्य श्री गणपति भगवान पूजनम कलस्थापना वरुण देवता श्री हनुमान स्वामी पूजनम हनुमान हनुमते नमः। अस्य श्री षोडशोपचार अस्य श्री स्नानं चतुभ्यं समर्पयामि। सर्वदेव नमस्कारं हनुमान चालीसा पाठ संग्रह अस्य श्री संकटमोचन हनुमान अष्टकं संकीर्तनम आराधिक्यम सर्वदेव नमस्कारं पूजनं पूर्वकं नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धनधान्य स्मृद्ध्यातं नवग्रहामकेन यचे इति संकल्पम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो स्थारिक्षो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयाः पृथिव्यां पय ओषधीशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुररातमसि विष्णुस्नप्रेष्ठो विष्णुसूरसि विष्णोद्रोवसि वैष्णवमसि विष्णवे तव अग्निर्देवता वातुदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रदेवतादित्यदेवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतये शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसव इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्विराय प्रभरामहे मति यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे यस्मिन्ननातुरं
एतन्ते देवा सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञापतिं तेन मामव ॐ मनो ज्योतिर्जुषतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठागुं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामोगं प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठानामयज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेवा प्रतिष्ठितं भवति गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानी गर्भधमातुं मजासि गर्भधम् ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यापतेषु नियादपे विद्यारम्भे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति स्वस्ति वचनम् ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गं गणपतये नमः ध्यानं समर्पयामि ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गं गणपतये नमः आवाहनं समर्पयामि ॐ महागणपतये नमः नमो व्रातपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः आसनं समर्पयामि नमः गुं ॐ गं गणपतये नमः पादयो पादयामि नमः गुं अर्घयो अर्घयामि नमः मुखे आचमन्यं समर्पयामि नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमः गुं ॐ गं गणपतये नमः पञ्चामृतमया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहतां महागणपतये नमः गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणा तसी नदी कुर्वन्तु वा पूर्णमनोरथं सदा ॐ गं गणपतये नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ स्नानं च तुभ्यं नमः ॐ शुद्धोदकस्नानं च तुभ्यं नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वागुंसस्तिनोभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः महागणपतये नमः गन्धं धारयामि नमः ॐ कुङ्कुमं च तुभ्यं समर्पयामि नमः महागणपतये नमः अक्षतां समर्पयामि नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ बालगणपतये नमः ॐ तरुणगणपतये नमः ॐ विद्यागणपतये नमः धूपं नहीं है धूपं दीपं जदुभ्यं नमः ॐ महागणपतये नमः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतं धूपदीपनिवारणाय नमः ॐ गं गणपतये नमः धूपदीपनिवारणाय नमः नैवेदयामि नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा सुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यमाचमन्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नमः
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ धूपदीपनिवारणाय नमः। महागणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि नमः। महागणपतये नमः। ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्याफलदामता शान्तिं प्रयक्ष मे। महागणपतये नमः। एहि हेरम्भमहेशपुत्र समस्तविघ्नोघ। नया कर्पूर चाहिए पंडित जी, एक और कर्पूर चाहिए, नया कर्पूर। ओम कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितं हारातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवम्। कर्पूरनीराजनं ज्योतिः महागणपतये नमः। ॐ निराञ्जनं जतुभ्यं नमः। ॐ गं गणपतये नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पथे नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासी फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ते ससंशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसीदतः। बोले गणपति भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमासिताः मूले तस्यासिते ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्मृता कूक्षौ तु सागरा सर्वसप्तदीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणाहङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समासिता। श्रीकलशवरुणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। आवाहनं समर्पयामि नमः। वं वरुणाय नमः। आसनं समर्पयामि नमः। पाधयो पाधयामि नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। मुख्याचमनीयं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ मानस्तु केतनये मानो आयशो मानो घोषो मानो अश्वीश्वरीरिषाः मानो विरानरुद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्ता सदा मित्वा हवामहे इति मन्त्रेण कलसे गोमे स्पर्शं कुर्यात्। धान्यमसि धीनुहि देवानां प्राणायत्वा दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनु प्रसिद्धिमायुषिधां देवो वा सविता हिरण्यपाणिं प्रतिगृह्णां त्वच्चिन्द्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहिनां पयोवसि। ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ वं प्रचेतसे नमः। ॐ वं स्वरूपिणे नमः। ॐ वं अपाम्पते नमः। ॐ वं जलाधिपतये नमः। ॐ वं पाशहस्ताय नमः। ॐ वं तीर्थराजाय नमः। ॐ वं कर्मणिभूषणाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपमाग्रापयामि नमः। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमामाग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपदीपनिवारणाय नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतं धूपदीपनिवारणाय नमः। धूपं
धूपं दीपं जतुभ्यं नमः ॐ वं वरुणाय नमः नैवेदयामि नमः ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यम् आचमन्यं ताम्बूलफलं जतुभ्यं नमः ॐ वं वरुणाय नमः ताम्बूलफलं जतुभ्यं नमः ॐ दक्षिणां जतुभ्यं समर्पयामि ॐ वं वरुणाय नमः ॐ वं प्रचेतसे नमः स्वरूपिणे नमः अपां पतये नमः जलाधिपतये नमः पाशहस्ताय नमः ॐ नमो मकरवाहनाय पाशहस्ताय वे नमः नमो प्रचेतसेनाय वं वरुणाय नमः हिरण्यसिंहं वरुणं प्रबध्यं तीर्थं मे देहि याचिता यन्मया भूतं साधूनां पापे भयश्च प्रतिग्रह यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्ना इन्द्रो वरुणो बृहस्पति सविता च पुनन्तु पुनः पुनः देवदानवसंवादे मत्यमानो महोददौ उत्पन्नौ सतदा कुम्भो विधृतो विष्णुना स्वयं त्वतो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि तां त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणापतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिम् आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका सान्निध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा ओम वं वरुणाय नमः। बोले श्री वरुण भगवान की जय। अच्छा, इसको तो हनुमान जी जी दो लोटा चरणामृत आरती भी दीप दीप Angstgut. बोले पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। पवन सुत हनुमान
भगवान की, सिया भज रामचंद्र की। ओम श्री हनुमन्नमस्तुभ्यं इहागच्छ कृपानिधे, पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु, आसनं श्री पवनपुत्राय नमः। प्रणवौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहु राम सरचाप घन। अतुलित बलधामं हेमशैलाबदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां मृगगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमः। हनुमान की जय।
यद्भूतं यच्च भव्यं सुतानि तत्त्वशेषान् यदन्नेनातिरोहतिं एतावानस्य महिमा यतो जायांश पुरुष पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वा उदय पुरुष पारोसेह पवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशनेऽभि तस्माद्विराजजायतं विराजोऽधिपुरुषः सज्जातोऽत्यदिच्यतात् पश्चात् भुविमतो पुरा यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्य सीदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्धवे सप्तास्यासन् परिधयः कृता सप्तासमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वान अबध्ननं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रता तेन देवायाजन्ता साध्या ऋषयस्य ये तस्माद् सर्वहुतः सम्भृतं वृषराजं पशूङ्गस्ता चक्रे वायव्यान आरण्याग्राम्याश्च ये तस्माद् सर्वहुता स ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद् जायत तस्मादश्वा जायन्ता ये केचुभयादतः गावो हजग्गिरे तस्माजात अजावयः यत्पुरुषं व्यदधू कतिधाय कल्पयम् मुखं किमस्य कौ बाहू कावुरुपादा उच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोतदस्य यद्वैशापद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्दश्च अग्निश्च प्राणाध्वायुरजायतम् नाभ्यासिदन्तरिक्षागं शीष्णोः द्यौः समवर्तथां पद्भ्यां भूमिर्दिशा तथा लोकामकल्पयन् वेदामहेतं पुरुषा महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य वीर्यः नामानि कृत्वा विवहन्यथास्ति तानि धर्माणि प्रथमन्यासनः देहनाशं महिमानः रामभक्ताय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। सीताप्रियाय नमः। भरतप्रियाय नमः। लक्ष्मणरक्षणार्थाय नमः। ॐ हं हनुमते 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 नमः।
Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri 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 Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri 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 Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri 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 Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri 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 Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram.
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान शरणागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान शरणागतं ओम कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूरनीराजनं तुभ्यम् ओम हनुमते नमः श्रीरामदूताय
रामचंद्र की जय। जय। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवहनिर्जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहि लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनेयमतिपातलाननां काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरमूलवासिनीं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। बोले पवन सुत हनुमान की, सियाभज रामचंद्र की जय। भक्तिहीनं यत्पूजितं मया देव Shall we start? Let's go. Umi, make it happen. Wait, are we gonna like mention before? We start praising thing, man. Then sit down, Om Om Shanti. Then. Okay. Om Om Shanti. बोले पवन सुत हनुमान की जय।
Shri Ram, Shri Ram, Hey Ram, Hey Ram, Hey Ram, Hey Ram. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvamangalmangalye Shive Sarvarthasadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Vande Devam Umapatim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannagabhushanam Mrigadharam Vande Pashunam Patim Vande Surya Shashankvahannayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhaktajanashrayancha Vardam Vande Shivam Shankaram Vamshi Vibhujitakarananavaniradabhat Pitambara Darunavimba Phaladharoshthak Purnendu Sundar Mukharavindranetra Krishnat Padam Kimapi Tattvamaham Najane Sri Ram Ram Raghunandan Ram Rama Sri Ram Ram Bharatagraj Ram Rama Shri Ram Ram Ranakarkash Ram Rama Shri Ram Ram Sharanam Bhavadham Rama Atulita Baldhamam Hema Shailabadeham Dhanujavan Krishanum Jnaninam Ragaganyam Sakala Guna Nidhanam Vanaranam Adhisham Raghupati Priya Bhaktam Vatajatam Namami Bole Ganpati Bhagavan Ki Jai Bhavani Shankar Bhagavan Ki Jai Pavan Sut Hanuman Ki Jai Siyavar Ramchandra Ki Jai राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय गुरु महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय Jai Sitaram everyone and welcome to our Tuesday evening satsang Satsangatve nisangatvam nisangatve nirmohatvam nirmohatve nischalitatvam nischalitatve jivan mukti where satsang brings jivan mukti freedom in this life that we are living. Welcome you to our online program and the temple as well. Hanumanji Bhagwan's blessings on all of you, and hope and pray that you are well and you're happy. If you can, before we start the program, kindly share this broadcast on your feed, on your Facebook and Instagram, and wherever you are, so that others can be part of this as well. We are broadcasting live on YouTube and on Facebook. I want to welcome our viewers from Trinidad as well, from bhaktitv.com. My pranam to all of you. And we're going to start. Aditya is going to do a kirtan for us, a bhajan or so, then we'll get started. Hey Shri Shashayana Narayana Hey Shri
शयन नारायण वेद परिण नारायण वेद परिण नारायण भवभय हरिण नारायण भवभय हरिण नारायण पवन चरिण नारायण पवन चरिण नारायण नारायण हरि 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 नारायण हे शेष शयन नारायण हे शेष शयन नारायण वेद परिण नारायण वेद परिण नारायण भवभय हरिण नारायण भवभय हरिण नारायण पवन चरिण नारायण पवन चरिण नारायण नारायण हरि 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 नारायण हे शेष शयन नारायण हे शेष शयन नारायण वेद परिण नारायण वेद परिण नारायण वेद परिण नारायण बोले पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय. Now, what is Hanumanji's favorite slogan? What makes him happy? Anybody know? Can we hear? And I want to hear everybody chanting it, shouting it, and of course, all of you typing it on your online feed, on your remarks. And his favorite slogan is Jai Shri Ram. That which brings him so much strength and so much energy. That is Jai Shri Ram. So let's go. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Bhumika will sing bhajan, no? रघुवर 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 तुमको मेरी राज तुमको मेरी राज रघुवर 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 तुमको मेरी राज तुमको मेरी राज सदा सदा में शरण तिहारी सदा सदा में
पालन तिहारी, तुम हो गरीब निवाज रघुबर, तुमको तुमको मेरे राज, तुमको मेरे राज, तुमको मेरे राज। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक. This is the Sankat Mochan. It means Hanumanji is the healer of our sicknesses or diseases. We have to give him all. When we give him our sadness, we must give him our happiness. Our faith must be unshakable in him. And as such, when this happens, then whatever is shaking you up, he will uplift you. This evening, let's give thanks to Hanumanji and chant the Sankat Mochan Hanuman Ashtaka. बोले पावन सुत हनुमान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट यानी सो जात न तारो। देवन यानी करी बिनती, तब चार दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। बाली की त्रास कपीस बस गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। लय द्विज रूप लिभाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हरे अंगद के संग लैन गए, सिय खोज कपीश यह बैन उजारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए इहा पग धारो। हेरी थकी तत सिंधु सभय, तब लाई सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। अरे रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी को कहु शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारथ निचर मारो। चाहत सिया अशोक सो आगी, सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम।
लग्यो हुर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो लय गृह वैद्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उबारो आनी सजीवन हाथ दये तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम रावण जुत अजान कियो तब नाग की पास सब सिर धारो श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो आनीख केस तब हनुमान जो बंधन काति सो त्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देव ही पूजी भली विधि सो भली देव सब मिली मंत्र विचारो जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन समेत संहारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। ओ काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो हरे संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो हो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अय संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगुर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली भगवान की जय। And to that Lord, which Hanumanji gets his strength from, just like you get your inspiration and your strength by thinking about someone or by calling a particular name. You know, sometimes no matter how down we are, no matter how low in energy you are, no matter how you're feeling in the day, like you cannot move another step in your way. Have you felt like that? Through sickness or even naturally, sometimes we feel, you know, there is no shame in this. There is no, you know, indignity in this, in accepting that sometimes we feel weak. There is nothing wrong with that. The strongest person will one day feel weak if they have not already done so. And
the healthiest person will one day become ill as well. There's no escape from that. No, death, decay, those are things that we cannot escape from. Every day as we're taking a prana, a breath of life, and we exhale, we are decaying slowly and we are dying slowly. There's no doubt in that. Every strong person will one day experience weakness, either permanent or temporary. And every healthy person will one day become sick. When that happens, sometimes you pick up the phone and you want to call someone and talk to them. Because you know that when you speak to them, no matter what happens, you're going to feel so relief. Even for a moment, even for that moment that you're talking to them. Right? Then they will tell you, send love and send best wishes, things. It doesn't matter. You feel good about talking to someone. You call someone, you think about, the minute you think about them, relief comes. Well, for Hanumanji, that was Sri Ram. Ram naam nar kesari, kanak kasipu kalikal, जापक जिह प्रहलाद में पालन दल सुरसार. Ram naam nar kesari. Ram's name, kanak kasipur kalikal, japak jiha prahalad mein. The name of the Lord Narayan was chanted by Prahalad, Dhruva and all of them. And it brought them superior relief and enlightenment. Imagine what it can do. If a rock can float with the name of Ram on it, imagine what it can do to you and me. So that name with Sri Ram, with Hanumanji rather, fueled from. That name from which Sri Ram draw his strength and energy from, it is that name that we meditate upon. I'm gore or ragraying this thing every week because I think a time will come when we will find the cure for many sicknesses. But we will never find the cure, my friends, for our own little sicknesses that we cause by ourselves. There is nothing that can go wrong with you if you chant God's name. Right? Things will happen, whatever, but there is nothing wrong that will come out of chanting God's name. Chant the Ram's name, not the wrong name. So, to that Lord who he drew strength from, when he think about the Lord, immediately his body is fueled, his courage is restored. He never loses it, but it's even more this time. It is to that Lord, Prabhu Sri Ram, that we bow this evening and we give our salutations. Shri Ram. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Shri Ramchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhav Bhay Darunam Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Kanj Pad Kanjarunam. Shri Ram, Shri Ram. Kandarp aganit amit chami navneet neeraj sundaram pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram. Shri Ram, Shri Ram. Dana Daityvanshani Kandana Raghunanda Anand Khanda Koshal Chanda Dashrath Nandana
Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Sir mukut kundal tilak charu udar ang vibhushanam. आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम. श्री राम, श्री राम, Shri Ram, Shri Ram. इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम. मम हृदय कंजनिवास गुरु कामादिखल दलगंजनम. श्री राम, श्री राम, श्री राम, Shri Ram, ओ श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम. श्री राम राम रघुनंदन राम राम. श्री राम राम भरता ग्रज राम राम. श्री राम राम वरन कर्कश राम राम. श्री राम राम शरणं भव राम राम. श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि. श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि. श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि. श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये. बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय. पवन सुत हनुमान की जय. Hanuman ji is the most famous song in the world that is written. It's called the Hanuman ji Chalisa. So let's sing it together this evening and ask Hanuman ji Bhagwan to bless all of you, all our lovely children who are in exams. May Hanuman ji Maharaj give you the ability, as I would say to the children, may Hanuman ji fly away with all the difficult questions. Well, if all the questions are difficult, then you will not have an exam. But may Hanuman ji strengthen your intellect so that you may be bright, you may pass your exams and never forget him. You know this word named buddhi? Buddhi is the sharpness of your intellect. How sharp you are intellectually, it matters a lot in your life. Buddhi. Let your buddhi become your body. Let your buddhi become your body. But buddhi is not an intelligence to get a certificate alone. Buddhi means that you are equipped with the right knowledge to use it at the right time, at the right place, for the right purposes. You know, intelligence cannot be used to solve all the problems of life. It is used in certain aspects of life. But as Hanumanji blesses you with intelligence, young and old, grown, everybody, may you never forget him. You understand? Because part of intelligence is to remember. And if you get all the blessed knowledge and you just forget him like that, then it would make sense. So may Hanumanji bless all of you, all our lovely children especially, going into exams, doing your schoolwork, preparing yourself for the next stages of life. May Hanumanji bless all of you. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghubar Bimal Jashu Jodayak Phalcharu Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हु कलेश विकार. बोलो
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ भग और ध्वजा विराज, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि अंध जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल्दी लांघि अचरज राहि। ओ दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हो और मनोरथ जो कोई रावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सुभग दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो
देवता चेत न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ कर कोई, जो तहि बंदी महासुख होई। जो यह पर हनुमान चालीसा होय, सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महादेवा। की जयनाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु। बोले पवन सुत हनुमान की जय। One of the verses of the Sri Hanumanji Chalisa has told us, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि. Ashta Siddhi means 8 special blessing, 8 siddhis. In this life, there is something called siddhi. When you do sadhana, you attain siddhi. Right? Let me explain that to you a little bit. So there's different kind of prayers that people do. Some people wake up in the morning, put the flower on the altar, they pray a little bit. And prayer for some people means praising the Lord. Prabhu, you're great, you're powerful, Shantakaram, Bhujagashayanam. Just praise and praise God. It's beautiful. And then for some people, prayer means just pray to God and ask. So, Prabhu, make my children happy, make my grandchildren happy, make my uncle happy. And so you spend a couple of hours just ask and ask and ask and ask. Wrong with that too. But there is this prayer that's called sadhana. Sadhana is something that is done continuously in your life. Continuously. I was watching a video with, I think everybody know Arnold, the bodybuilder, the actor, Terminator, I'll be back, hasta la vista, you know him. So somebody was asking, why do you go to the gym every single day? He goes to the gym every single day. That's his life, right? Apart from being an actor. Why do you go to the gym every single day? He says, well, I eat breakfast every day. I eat lunch every day. Just for all those reasons, I go to the gym every day because it just makes me happy. There are some people as well, some of our lovely, beautiful brothers and sisters who they wake up in the morning and they devote themselves to God. Or they live life, their entire life as a devotion to Bhagavan. Not a Sunday alone, a Monday alone, or Shivratri or Ramnavami. They live their entire life in devotion to Bhagavan. Entire life in devotion to God. That is called sadhana. Hanumanji's life was a sadhana. His entire life he devoted to Prabhu without a single distraction. I mean, distraction came in his life, but he knew how to handle it. I've always told you that we know very much how to be happy. We know how to celebrate. What we don't know is how to deal with human sufferings. This type of environment teaches us. This type of activity helps us to understand how we deal with challenges and sorrows. And when we do our sadhana, when we devote our entire life to God, then what happens? There are certain siddhis that are given to us. In India or in many other places, you will see sometimes some sadhu will open their hand and sindoor will come out.
or a murti will come out, or they will take something out of their mouth, or manifest something from their hand. Some of them are real, some of them are fake, none of my business. But some of them are real. It means they have done so much sadhana in their life that things happen. They're able to bless you, they're able to manifest things with their hand, and so on. That is a blessing from God. It doesn't mean that they are God. It means that is a siddhi that they were given by God because of their sadhana. Similarly, Hanumanji Maharaj has what we call Ashta Siddhi Navnidhi Ke Data Asbaladhin Janki Mata. He has Ashta Siddhi. Ashta Siddhi means 8 beautiful blessings. One of the blessings, Anima Siddhi. Anima Siddhi. It means Anima. He could reduce his body from the big Hanuman to the size of an atom. Imagine an atom is a particle that you cannot see. An atom is the smallest particle. They're everywhere, you cannot see them. Imagine he can reduce himself from a big form into the smallest particle where nobody can see him. You remember when he went to Lanka? Masaka samana rupa ati bhari. Masaka samana rupa ati bhari. He was small as a fly when he entered Lanka. He can become smaller than that even. He can become as smaller than that. What does that tell you? A big body, a big person, when it is required, you must be able to trim down your size and become small. You know what that means? It means humility. It means humility. The kings, the queens, the presidents, the prime ministers of the world, many of them, when they are ruling in their own kingdom, they are the king and the queen and the president and the leaders and whatever it is. But in front of a saint, all of them bow down. All of them, or most of them, go to the church or to the mosque or the synagogue or to the temple. It means that no matter how big we are in possession, no matter how huge we are in size, there is someone that we have to be humble in front of, and that is the Bhagwan. The first siddhi he has is called Anima Siddhi, where he is able to reduce his body to the size of an atom. Then Mahima Siddhi. Mahima means the opposite. It means he can become as big as possible as he wants. He can become big, he can go so high into the skies and you will not see him. You remember when he met Surasa, the snake? He became so big that Surasa had to open her jaws. So big. You remember Vaman Bhagwan in the Srimad Bhagavad Mahapuran? When Vaman Bhagwan said in the Bhagavad Mahapuran that I need 3 feet of land, Mahabali says, what, 3 feet of land? Take it. But he became so big, till so big. And because he became so big, his feet got so big that there was not enough land to give him. Heaven and earth were all taken. This is called Mahima Siddhi. That is why when you call somebody Bhagwan, you must be very careful about that. Right? You hear a lot of times people say, this Bhagwan, that Bhagwan, because they can manifest certain things or whatever it is. No. Don't make that mistake and call people Bhagwan. You cannot equate creation with the Creator, my friends. Don't equate creation with the Creator. Bhagwan, anybody who said they're Bhagwan, ask them if they can become big and mighty as Hanuman. A very simple question. Can you become big and mighty as Hanuman? Right. The next one, Garima Siddhi. Garima. So what happened here? Garima Siddhi means to become heavy as possible. Hanumanji can sit like this and you can lift him up as a little monkey, or he can just sit there and become so heavy nobody can move him. There is a story. When Bhim was climbing the Gandha Madana mountain,
to get this Sugandhik flower for Draupadi. One day Draupadi she smelled a beautiful flower and she wanted to have the flower. And she said, Bhim, go and fetch me the flower, the Sugandhik flower. Bhim was going in the wrong direction, in the direction of danger. Hanumanji knew that Bhim was going in the wrong direction. So what did he do? He went on the pathway and he threw his tail down and he became an old monkey. And you know, when you're walking, you should not jump anything. You should not jump somebody's foot or their hand or whatever is in the way. So Bhim saw this old monkey and the tail was there. Bhim says, hey, old monkey, lift up your tail, I need to go. The monkey says, well, you know, I'm old, I can't even lift my tail up. Why don't you lift it up? Bhim took his two fingers trying to pinch it and lift it up like this. Bhim could not do that. He took his two hands. I rested on his feet. He could not lift it. And then he realized this is no ordinary. This is his half-brother, Hanumanji. Hanumanji can become as heavy as he wants. There are some times when you have to be as heavy as a mountain, immovable. The devotee of the Lord must be so strong. Their faith must be so strong. Garima represents your Shraddha, your faith. Means it must be so strong that no matter how much rainfall, no matter how much sun come down on you, no matter how much snow there is, no matter how much death or how much sickness, your faith must be Garima. It must be unshakable. It must be heavy, immovable. This is the devotee's blessing, Garima. Then you have Lagima Siddhi. Lagima comes from the word Laghu, which means light. As much as he can become heavy as possible, he can become as light as possible as well. There are times in life when we have to lighten our burdens. Lighten up. Everybody ever tell you, lighten up? Lighten up yourself so that you're not fetching too much weight. The weight that we're fetching on our shoulders, the weight that we're fetching in our head is going to give you a headache. It's going to cause you neck pain, shoulder pain, knee pain, hip pain, back pain, all kind of pain is going to give you. All this weight that you're fetching and distresses and sorrows, they are not meant for a human being. Even a rock cannot tolerate such weight. Don't fetch too much weight in your life, my friends. Lighten up. Chant Hanumanji Chalisa and lighten up. Next week we'll discuss the other 4 Siddhis. But the 4 Siddhis we've talked about today. Anima Siddhi. Become small when you have to. Mahima Siddhi, become Bhima Roop, become big when you have to. Garima Siddhi, become heavy when you have to. And Lagima Siddhi, lighten up when you have to. Because, you know, they say, don't take yourself so serious because nobody takes you too serious. Do you understand? Don't take yourself too serious. The only time a person is serious and all this kind of thing and stiff is when they are in a coffin. You don't want that. You have enough time for that. Lighten up, smile, be happy. Be happy about life because nothing is worth your happiness. Nothing is worth your happiness. A little worry is not worth your happiness. A little turbulence is not worth your happiness. Nothing is worth your happiness, my friends. And this is Hanumanji's message to us. Let us sing Hanumanji Chalisa. We have a dedication this evening for a little child. She's turning 5 years old. So we want to wish her a happy birthday. And please remember, Hanumanji Chalisa is sung here every Tuesday. You can send in your greetings, your blessings, your wishes. Today we're wishing happy 5th birthday to Emily Tushani Jagdeo and wishing Hanumanji's blessings to her with good health, intelligence, and all the beautiful things from her parents and all her family and friends. She's turning 5 today. I know her very well, of course, and her parents and grandparents and the whole works. So I'm very happy that we can sing Hanumanji Chalisa for her today. We sing this Hanumanji Chalisa and ask Bhagwan to bless her young life so she can have a beautiful and blessed future. May Bhagwan Hanumanji bless all of you as well. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghubar Bimal Jasu
जोदायक फल चारिणी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हारहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ भद्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम पाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे यस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका विमुख माहि जय दिलांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरे। अरे आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ पे काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई।
और देवता चेत न डरहि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिहारी। जो सत बार पाठ कर कोई, चूकहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेरा। की जय नाथ हृदय महादेरा। की जय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप सिया। भज रामचंद्र की जय, शरणम प्रभु। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सिया भज रामचंद्र की जय। A quick reminder that our walkathon event is on June 18th. We have not been getting registrations, so I don't know what's going on, but it's because we haven't printed the paper for people to sign up. But then most people are online these days, so we want you to visit our website. I'd like to see all of you there on June 18th at 8 a.m. to walk with us for about an hour and a half or so. And afterwards we'll have some refreshments. We'd like to see you here, and you can make a donation of $20 online to walk for the event. bhavanishankarmandir.com/walk. And please, when our volunteers reach out to you, you can register online, donate online, you can send your donation, doesn't matter. Just be here on that day, that's what we want, to walk with us. I'll be here to join you on that day on our walkathon. And really remember, the 26th of June is our 12-hour multi-kund havan, starting 5 a.m. and finishing 5 p.m. We hope and pray that you will join us for that as well. Arjun will sing a bhajan for us, which is going to be followed by Anaya, and then we do Aarti. बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम नाम के मोती को सांसों की माल बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा करे, और सदा सुख दाता। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम पतित पावन करुणा करे, और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मनुभावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम।
माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगा ले, मन में राम बसाले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम भजन में धूप के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम भजन में धूप के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा ले, जीवन पार लगा ले, मन में राम बसाले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। 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 I was Arjun from the temple, of course, our Sunday or Tuesday evening Satsang team here. Thank you so much for joining. Now we will have a bhajan by Anaya, another youth of our temple. We hope and pray that all of you are enjoying our Satsang. Please don't forget to support our temple continuously. I know it's warm weather now, and a lot of you are taking some time off and so, but we're always here and need your help in so many ways. We have some beautiful programs coming up, which I will announce as the time goes on. But for now, hope you enjoy and continue to support this beautiful temple of yours. We'll have a bhajan from Anaya now. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जिस गायो। बायो जी मैंने हर्ष हर्ष जिस गायो। बायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 Thank you very much. This brings us to the end of our Hanumanji Satsangh this evening. Reminding all of you again to stay in touch with our temple and to see you on the 18th of June for our walkathon. God bless all of you. Thank our little team here this evening who made this possible. All young people, of course, of the temple. And wish you all now a blessed, blessed evening and Bhagwan's blessings always. Do Aarti. Om Yani Kani Cha Papani Janmantarkritani Cha Tani Sarvani Nashyantu Pradakshina. आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बड़ से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देविया रघुनाथ बताए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सकोत समुद्र सिकाए, जात पवन सुत बारन लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। बोले गणपति भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरु महाराज की, जगदम्बिका माता की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण स्वामी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती माता की, महालक्ष्मी माता की। जयकारा शेरवालीला बोल साचे दरबार की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सत्य सनातन धर्म की। सबको ये जय जय सीताराम। जय सीताराम एवरीवन। May the divine blessings of Hanumanji Maharaj always be with you, to heal you, to guide you, to bless you always. Have a beautiful and safe night. Shubh Ratri from Bhavani Shankar Mandir. Good night.